Hello, everyone. Have you ever felt when somebody walks into a room, the energy, the vibration that he or she brings to that room? Or when one starts speaking or has been there in your presence for a while, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस मोमेंट से उसकी प्रेजेंस, उसके कंडक्ट या उसकी नॉलेज या उसकी कोई दूसरी ऐसी करिस्मेटिक क्वालिटी हो? इट कुड बी लीडरशिप, इट कुड बी सम ऑरा जो आपको उसकी तरफ है। और अगर ऐसा ख्याल आता है और फिर एक दूसरा थॉट अपने मोमेंट पे उभरता है कि क्या हम में भी ये बात हो सकती है कि बिल्कुल सही, कुछ बात है हम सभी में और कुछ खास है हम सभी में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट टुडे। वेलकम टू द हैप्पीनेस ओवर अ कप। आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में है अभिज्ञान, जिनके साथ हम कुछ पॉजिटिविटी शेयर करेंगे। वेलकम अभिज्ञान, आर यू रेडी टू sip some positivity in with me? Yes, sir. Thank you so much, sir. I'm ready with Alright. my Cuppa. वेलकम वेलकम। तो अभिज्ञान, Yes, क्या sir. तुम्हें भी ऐसा कुछ लगता है? क्या बात है। Definitely, sir. Definitely. एक अलग अट्रैक्शन फील होता है एंड हाँ एक पंप और एनर्जी भी फील होती है। ऐसा लगता हाँ है वी आर शेयरिंग द सेम एनर्जी। आई एम गेटिंग सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हाँ हाँ। एंड सर गो अहेड। फीलिंग ये भी होती है कि हम भी क्या ऐसे बन सकते हैं? कैन वी हैव दैट सेम एनर्जी, सेम ऑरा, कि लोग भी जब हमसे मिले या व्हेन वी हाँ, मीट पीपल वी कैन इम्पार्ट सम पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ। वेरी नाइस। और ये बिल्कुल एक नेचुरल ख्याल है। हमेशा वी लुक अप टू पीपल और जनरली हम जो है अपनी 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 स्पेस में रहते हुए भी हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बेहतर बनना चाहते हैं। So, ladies and gentlemen, if you remember in our previous episodes, we had looked at certain characteristics and traits of good all-round personality. And if I may say, those personalities have leadership, they have some aura or some charisma to draw everyone towards themselves. Now, the logical question that Abhigyan has also put is, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? तो मुझे इस पे वो याद आता है कि if one has seen somebody gardening or if you see a farmer, you prepare a bed, you know, उस पहले आप उस क्यारी को बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, and before you go ahead and develop those qualities, it will be very logical to look at how you should start the grassroots level. So when we talk of grassroots level, अभिज्ञान, तुमको याद होगा कि हमने एक पर्सनालिटी साइकिल शेयर किया था। मुझे जो एक चीज बहुत ज्यादा ड्रॉ कर रही थी वो ये थी, वो एक पॉइंट उसमें से दैट वाज क्यूरियोसिटी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी। If you all remember, in our first episode, we had discussed about personality cycle. So for the benefit of everyone, let me just run you through it. Once you are born and you are in certain surroundings, that is the energy and the vibrations of your parents, of your family, of your siblings, of your relatives. And as you keep growing, your friends, your community, your society, your education, your school. So हर एक आपकी thought process को shape करता है. What forms is your belief, and those beliefs lead to certain values that you imbibe from the environment. So if you remember, Abhigyan, we have spoken about imbibing certain qualities subconsciously, yet we had to become very conscious when we had to develop certain new habits. So now Yes. those are certain value based thoughts which give rise to certain emotions and feelings. And once those emotions and feelings
are kind of solid, they give rise to certain words, actions, or some kind of behavior patterns. These words, actions, and your value based thoughts put together form an attitude. And then those attitudes help you make a habit or behavioral patterns. And these behavior patterns, when put together, constitute a personality. It has various aspects, that is mental, physical, spiritual, financial, and all those put together form a personality. If you have to, kind of dissect it and understand as to what are those values and how are those values formed, it is better to go back to the system of the total environment and the thoughts which shape up in the surrounding or uh, being in that environment. Raj, what do you say? Uh, no, sir, it's making sense to me. As Mhm. but sir, I had one question that Uh, uh, you know when we are kids, right? Uh, what we are not very much aware of the environment, right? That environment also consists the people that are around me, and they are continuously emitting some form of energy, because we as kids are mhm, very fearless and enjoyable, that okay, mhm, it's happy. And it's when we are like 20 or 21, you know uh, and then we start thinking that yes, these people are also contributing, the people around me, the people I spend most of the time, they are contributing to my habits, you know as they say that you are the average of 5 people you are with. So can I now take the charge of my environment? Like, is it really possible to change my environment? Because if we are starting from the environment, it is something that let's say I made a friend, but later, or I joined a group, but later I thought, oh, this is not in congruence with my goal, or the personality that I want to become. So can I now take the charge of my environment? yes, certainly. So let me again decipher this question and put it simply. So if Okay. I want to decipher this, I would want to say, can I take control of my life? Assume charge of Ah, my life. And now when I have to assume charge of my life, what should I do? To change the environment, either you make certain changes in your lifestyle, or you move from that space and move to a space or a place which has the conducive environment, like you said, certain things which are not in congruence with your thoughts or with your identity, or you've started to question it, then it is very logical and rational to kind of understand what is the environment, what is it doing good for you. Like you said, a man is sum of five average people that he is been with. So if those five people have not caused or have caused certain good in you, then you better examine it, that if it is for your good, do it, or the best is okay. This company is not work for me. I might, think of doing something else. So that is where it comes. How easy or difficult will it be for one to think and change or work on the values? But as we are talking of the values, Abhigyan, do you think yes. that there should be certain values or certain qualities which are essential for a overall good personality? ऐसी वैल्यूज Yes. या ऐसी क्वालिटीज कुछ इंसान में होनी चाहिए, और वो कैसे आती Mhm. होंगी? I mean, Yes, uh, sir. as I'm talking to you and you mentioned the word curiosity, I am curious कि ये कैसे आती होंगी? One quality that I really like emphasize on, that everyone should have, is being true to oneself, not just to Okay. others, but true to Uh-huh. oneself. So this is Okay. the basic quality that I think, yes, that everyone should have. So, Or so don't you think when we're talking about these qualities, तो ऐसा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इन qualities को
किसी पर्सनैलिटीज के साथ जोड़ के ही डिस्कस करें। हाँ, जैसे हाँ। आपने ही कहा था कि फाइटर पायलट्स हैं, तो उनकी कुछ यस सर। क्वालिटीज हैं, एक फ्लैम्बॉयंस है हाँ, अलग, डिसीजन मेकिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो हाँ, कैसे आएगी? डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव हाँ, हाँ, डिसीजन मेकिंग आएगी कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस आएगा प्रोफिशिएंसी से, अपने काम की प्रोफिशिएंसी से। प्रोफिशिएंसी आएगी नॉलेज से, प्रैक्टिस से और सिचुएशंस देखने से। और जब ये चीजें चाहिए तो एक बेसिक एसेंस सर्टेनली आता है इनके पीछे कि एक अच्छी पर्सनालिटी हम्म, को नॉलेज ड्रिवन होना चाहिए। नाउ यस नॉलेज सर। ड्रिवन के लिए कौन सी क्वालिटी आएगी? जो कि है क्यूरियोसिटी। और ये यस सर। क्वालिटी अगर क्यूरियोसिटी की है तो क्यूरियोसिटी को अगर हम और पीछे जाके देखना चाहें तो क्यूरियोसिटी का मतलब होगा अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है हाँ, मैं जहाँ बैठा हूँ अभी। व्हाट इज अवेयरनेस? कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसका आभास। अवेयरनेस आभास। जो अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, जो ओवरऑल वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज हैं, जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, वो उनके अंदर ये शायद हाँ, चीजें हैं। उनके अंदर अवेयरनेस है कि अपने बारे में अवेयरनेस। जो आपने कहा कि पहले सेल्फ खुद से सच बोलना, वो एक अवेयरनेस है। तो इसी से आप देखिए कि अब दूसरी क्वालिटी आती है जो हमें याद दिलाती है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? ओके, महात्मा गांधी ने किताब लिखी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ओके। तो उनकी सबसे बड़ी वैल्यू थी बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ट्रूथफुल। हाँ, और इन दो वर्ड्स से निकलती है तीसरी वैल्यू विच इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, जिसका बोध या ज्ञान या जिसकी अवेयरनेस मुझे बड़े होने के बाद अपने वर्क एनवायरनमेंट में जाके। एंड इंटीग्रिटी इज यस। डूइंग थिंग्स राइट और ऑनेस्टली इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। तो चाहे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपके अंदर वो इनबिल्ट है, वो ऑनेस्टी टुवर्ड्स द पर्पस और वो ऑनेस्टी या लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉज। तो वहां से दूसरी एक वैल्यू आती है लार्जर पर्पस। तो महात्मा गांधी के अंदर शायद ये दोनों चीजें थी और इन्हीं से स्टेम कर रहा था जो उनका एक मिशन था, दैट वाज नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो महात्मा गांधी की हमने बात की। और कोई तुम्हारे सर। हीरोज यस सर। जिनसे हम दूसरी वैल्यूज ले सकें? Uh-huh. So when we were talking of MS Dhoni, and I said, a term we said that his temperament is very cool. He's a cool हाँ, personality, and that is because of the confidence that he has in his team, right? हाँ, हाँ, But if we see this world, uh, isn't it made in this way that we are good only when we are better than others? That we have made it a zero sum game, that to be better, I should be +1 and the other one should be -1. So in this environment, how can we build confidence? वो confidence वो हम एक्सेलेंट कैसे लाएं? क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है which helps me dig deeper into how we think. The environment has created a belief in you that to to be confident, you have to be better than somebody. You are born here to, like I say, live this life, live this beautiful life in this magnificent world. अगर आपको वो करना है, to add to the beauty and the magnificence, you should do your best. And your best now is relative again. Somebody may be a notch better than you. That really doesn't mean that you would not have confidence in yourself. So that is where the environment comes in. It depends. If you go to an environment, if you come to my environment, at least, I would tell you that you do your best. You do your best, yes. Always come back. Like you said, one of the qualities of the pilots was to go back and look at what they could achieve and what they could not achieve. So that is certainly better. So you go back and go back to the drawing board and see कि कहाँ पे आप और अच्छा कर सकते थे
ऐसी आपकी कौन सी क्वालिटीज हैं यू कैन डू। आई मीन इफ आई हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स, यू डू योर स्पॉट एनालिसिस कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, Mhm. अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट क्या है, और Mhm. आपने क्या अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया कि नहीं किया। तो नाउ Mhm. क्या आपके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, उनको आप कैसे और बेटर करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि मुझे उससे बेटर Mhm. होना है, सो आई कीप सेइंग दैट यू नो वी आर ऑल बॉर्न यूनिक। हम तो अपनी Mhm. यूनिकनेस के True, साथ sir. आए हैं। तो हम अपनी यूनिकनेस को पॉलिश करें, तो हमारी यूनिकनेस हो Mhm. सकता है कुछ नॉचेस बेटर ही हो सकती है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड Mhm. लगाया, रखा और सोचा मुझे इससे ऊपर जाना है, तो Mhm. क्या पता कि वो स्टैंडर्ड अल्टीमेट था या नहीं। नाउ दैट इज Mhm. अ बिलीव दैट यू कैन थिंक एंड वर्क, एंड लाइक आई ऑलवेज कम बैक। इसी तरह आप बहुत सारे बिलीव्स को एग्जामिन कर सकते हैं। So we will certainly catch up more on this subject and go into certain detailed values and qualities that the very effective personalities carry. So Abhigyan, I think Mhm. we have done some bit to add value, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे शोज पसंद आ रहे होंगे, और अपने Yes, सुझाव sir. हमें देते रहिए, और ज़रूर बताते रहिए कि क्या हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो टिल वी मीट अगेन, Abhigyan, it is time for you to say signing off. Yes, You do it better. to all my dear friends, one request that I have is you can also comment. What are the personality traits you think your ideals have in the comment section, and we will definitely take it up from the comments. Also, if you have any suggestions and or any topic that you want us to talk on, do write it in the comment. And if you have not watched our previous episode, all the links will be in the description. And this podcast is also available on Spotify and Amazon, Google Podcasts in the audio format. A video you can tune with us on YouTube. Thank you so much for joining. All right. So, ladies and gentlemen, take good care of yourself and stay happy, stay smiling. Bye bye.